Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe. Wishing you a wonderful green morning, green afternoon, green evening. We should all start respecting nature, live with the nature, think about nature, talk to nature, walk with nature, sing with nature, music with nature, happiness with nature. If you really want to empower, enthusiasm, repackage the education ecosystem, we got to rethink what are we covering, what do we cover, how it has to be covered, what all has to be taken into consideration. There are a couple of things which we all have to take care of as an educators, as an administrators, as a teachers, as principals, as headmasters, as vice chancellors. Let it be any vertical, school education, higher education, technical education, vocational education, need-based education, online education, any education we talk about. There got to be a new pedagogies, there got to be innovations, creativity, collaboration, and of course, ultimately, most important is curiosity. So to bring that curiosity in every child, in every teacher, our focus is teachers, teachers, teachers. And please understand, we are one of you. We are doing the hand holding, and we just want, we all should walk together, talk together. And this morning, this afternoon, this evening, whatever time zone you are in, world over, today we have got 1458th webinar. That's on 20th of February, 2022. Inspirational educators. And the source, resource, Strot, Jagriti, and Jeevani, Sanjeevani, kuch bhi shabd use kijiye. We have got today Dr. Deepak L. Waikar ji, the founder and the managing partner, Edu Energy, all the way from Singapore. You can well imagine, Singapore is 2.5 hours ahead of us. So you can feel the energy of a person who is ready to take on a session at 10:30 to help us. It means he's deeply, emotionally, spiritually, environmentally, he is linked with us that the Indian education ecosystem should be empowered. And why not? World over challenges are there. If 1.65 billion children were away, that means challenge for the whole universe, and we all have to walk and talk together. Today is a very important day on the Indian soil. It's Arunachal Pradesh Foundation Day, 20th of February. So let us empower our teachers and youth to build India through Arunachal Pradesh. Aru Ka Aanchal. Beautiful state. I started my green uniform right from here, and I'm proud of this particular state, wonderful state. And today, while wishing everybody in Arunachal Pradesh, we also I offer my services, chamber services, and also today's resource person services. Whatever way we can empower Arunachal Pradesh, we would love to do, because my first rank of the Indian Army and my first star, my first commission, my first salary, my first posting, everything starts. And this place is beautiful Tawang. There's a Tawang festival every year. Today the state is celebrating. Let's join their feast. Now, International Chamber for Service Industry, during this particular pandemic, like the doctors, nurses, paramedical people doing great job like warriors, we also took on the journey when we got in touch with Mr. Eric Falt, the director of the UNESCO in India. And we discussed with him, and we came to know that there's going to be a challenge, very big challenge, and teachers got to get into the new mode. Imagine what was the scenario on 25th of March, 2020. And that time, a lot of struggle, everybody, Zoom, Microsoft, Google, Cisco, all the platforms, whatever is available, and parents calling their children, please come, tell me how to show PPT from here, how to go by, what is to be done. By this time, you all are very comfortable because the new education policy also came on 29th of July, 2020. Imagine within 3 months of the lockdown, we got into, after 34 years, the new education policy, altogether a game changer with a commitment that 6% of the GDP will be spent
on education ecosystem. It means importance to education. So when we move over here, let's focus on our teachers, because they're also burnt out. They need hand holding. We got to help them the best possible way, whatever we can do from our side. So ladies and gentlemen, let's move on. Lockdown, lots of challenges. We are coming out of it. The whole world is one family, global education, collaboration. Vasudhaiv Kutumbakam. One world, one love, one family, one education ecosystem. Is a beautiful road, country road, take me home. Teachers and youth, we are with you, 2022. Our chamber has started a wonderful new program, although it came in Scandinavian countries long time back. And Denmark was the first country which took advantage of it. And we are bringing to Northern India, and that is Human Library Lab, where the actual life story of the people, the warriors, the great stories, inspirational stories, it's a human library concept. Last week, we started this program. Every Monday, 8 p.m., you will have this program. We had Lieutenant General K.J. Singh, the former Army Commander, Western Command last week. And now you're going to have tomorrow, Lieutenant General Iqbal Singh Singha, AVSM, VSM. So he's going to talk empowering educators and youth, storytelling, Meri Kahani. We are also bringing a great program because Honorable Finance Minister on 1st of February, she made an announcement that the mental health and our chamber takes care of. Let's expand the forum, mental health and wellness. If we bring wellness also, I think it would be quite nice, because educators, teachers, students, parents, trainers, technocrats, counselors, and the entire community needs a support in mental wellness. It's your physical wellness, it's your spiritual wellness, it's your environmental wellness, it's your mental wellness, and more important is economic wellness, because you all have suffered a lot during this particular pandemic. So ladies and gentlemen, let's move ahead. Remember, 4th of March, we are going to have a 7-hour marathon with the global leaders, and that we are going to talk about mental health and wellness in education ecosystem. This will be available to you on the YouTube live. So Napoleon Hill, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together. Let's make education and skills relevant. All of us, we got to get together. This pandemic has taught there is no competition. It's a collaboration. It's curiosity in the children which has to be brought back. And particularly when now the education ecosystem will be reopening, we got to bring that happiness on every face, every child, every teacher, every student. That part we have to work out. So ladies and gentlemen, every Sunday we dedicate to the non-resident Indians, their contribution towards Indian education ecosystem, our education, our skills, how they can be strengthened, empowered. So today let's meet the inspirational educators, Dr. Deepak L. Waikar. He's joining us from Singapore. He's from the ADU Energy. Join me in extending a very warm welcome. And it's a pleasure to have Dr. Deepak L. Waikar. What a pleasure. You are giving such a soothing in the backdrop to me. I feel the beautiful waves are coming and they are singing a song. And that was Mosmi Chatterjee. Sunri Pavan, Pavan Purvaya. What a beautiful music coming at the backdrop. So with these words, Dr. Deepak ji, let's take on, let's inspire, encourage, hand-holding, whatever best we can do for our teachers. Our teachers, they are at the center stage now in the new education policy also. Parents also expect a lot from them now, particularly I should call it a post-pandemic, or we are coming out of the pandemic, this third wave also. Things are getting better, and let's repackage, rethink, reimagine what all is to be done in the education ecosystem with a focus on hand-holding of our teachers. Dr. Deepak L. Waikar ji. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने तो
बहुत सारे गुलशन खिलाए हैं। ओके शर्मा जी, अब मैं ये आपसे सुन रहा था, यू आर एक्सलेंट इंस्पिरेशनल स्पीकर, वंस यू आर देयर आई थिंक व्हाट दिस वेल बिगन इज हाफ डन, मेरा काम तो आसान कर दिया आपने। तो अभी तो मुझे बस सिर्फ जो जो लहरें पीछे से आ रही है उस पे सिर्फ जस्ट तैरना है। आपकी जो लहरें आई बहुत सारी, सुंदर सी, बढ़िया सी, और गाने के साथ भी आई, तो बस उस लहर पे मेरे को सिर्फ तैरना है। बाकी मैं क्या, बस मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। अ, मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन आपने हमें याद किया। ओके, और हम कहेंगे आपने पुकारा और हम चले आए। हाँ? पूरा ज्ञान हथेली पर ले आए। ओके। हाँ? तो आपको पता ही होगा, बहुत प्यारा प्यारा गाना है। हाँ? गाना चाहते हैं आप? मुझे लगता है आप बड़ा गाना बड़ा चाहते हैं। बड़ा अच्छा गाना था शमी कपूर जी का। हाँ। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। राजकुमार का बहुत बढ़िया गाना था। बस लवली। हम, एंड आपने तो कहा कि सब कुछ ही लेके आ गए, चलिए हाँ आइए। हम देख, ज्ञान हथेली पर ले आए, ज्ञान, ओके आपने बोला ज्ञान दिल से ले आए, ज्ञान दिमाग से भी ले आए। क्या आपने कहा ना, दिमाग, हाथ और दिल सबके साथ, सबके पूरे के पूरा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपके साथ हूँ। और जब आप साथ होते हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं रहती। ओके, चिंता नहीं रहती, बस मैं अपनी दिल की बात एक कह दूंगा। और मुझे मुझे बहुत बहुत आत्मविश्वास है कि मेरे से कुछ गलतियां हो जाएंगी तो आप संभाल ही लेंगे, क्योंकि मैं तैरने आपके आपके लहरों पे तैर रहा हूँ गुलशन जी। तो उसके हिसाब से तो आप अगर मुझे आज्ञा दे तो एक कुछ स्लाइड्स बताना देना प्लीज प्लीज गो हाँ हेड, प्लीज गो हेड, प्लीज, यू गॉट ऑल द राइट्स, यू गॉट ऑल द थैंक यू राइट्स। वेरी मच। और हम फिर इनसे भी ये भी लेंगे, जैसा आपने एक सुंदर अभियान शुरू किया है आपने, मुझे पता नहीं था। ओके, मैं कुछ वंडरफुल। पाँच ना कुछ 5-10 मिनट में थोड़े अपने बारे में बताऊंगा, फिर हम दोनों कुछ संवाद करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो मेरे आपने तो मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों, प्राध्यापकों, अगर है तो परीक्षार्थियों भी, टुडे आई हैव indeed great honor and pleasure to share with you something, okay, which is I thought very light one, not to worry, because गुलशन जी ने तो कह दिया है कि तनाव बहुत बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। तो मैं इतना तनाव नहीं दूंगा आपका, तनाव थोड़ा हल्का कर दूंगा, इसलिए 4 तारीख को मुझे बुलाइए, मैं हल्का करूंगा तनाव। ओके आपको बता भी दूंगा आज। सो आई हैव चोजन द टॉपिक, व्हाट्स इन द नेम, मिथ वर्सेस फैक्ट। ओके, क्या है नाम में, क्या है नाम में, मिथक बनाम तथ्य। ओके, और गुलशन जी ने तो कहा है कि हमको री इमेजिन करना है, री थिंकिंग करना है, जो भी है कुछ है। फिर भी अगर आप मुझसे संवाद करना चाहते हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो इसके बाद आपसे करूंगा ही, नहीं तो आप बेझिझक, बेशक गुलशन जी को लिखिए, वो मुझे, वो तो मेरा कान पकड़ के आपके सामने ले आएंगे मुझे। ओके, तो चलो सही बात, चलो शुरू करते हैं। और शुरू करते वक्त मुझे, मैं माता सरस्वती का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम जो भी कार्य, जो भी योगदान हाथ में लेंगे, दिल से, मन से अगर हम करेंगे तो माता सरस्वती हमें
सिद्धिर भवतु में सदा ये आशीर्वाद देती रहे। गुलशन जी, मेरा आवाज ठीक है सुनने में? कब? Absolutely fine, वंडरफुल। fantastic. So for my international friends, I'm invoking the blessings of Goddess Saraswati, who is the seat of all knowledge. Okay, without her blessing, you cannot get the proper knowledge, or you cannot enjoy the what they call the nectar of the knowledge without the blessing of Goddess Saraswati. So I am prostrating in front of her. I'm taking her blessing so that this event will become successful. And most importantly, गुलशन जी ने जो अभियान चलाया है, अभी तो बोल रहे हैं 1458, ओके, 1458। अब मेरा नंबर आया है 1458। तो कितने देर के बाद नंबर आया मेरा, देखिए। तो उनका जो अभियान है ऐसा ही आगे चलता रहे, ये भी मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। चलो, हमने टॉपिक तो लिया था कि क्या है नाम में, ओके, व्हाट्स इन द नेम। तो मुझे बताने में बहुत खुशी है। आई वाज बोर्न ऑन डे ऑफ दीपावली, ओके, फेस्टिवल ऑफ लाइट, सम कॉल इट दिवाली, ओके, few decades back. लेकिन मैं, so my parents named me Deepak. And all of those who come from the Asia, especially in the Indian continent, they know about the importance of Festival of Lights. And that festival, those all in education, especially from India and in the region, including Singapore and Malaysia, Mauritius, and Indonesia, they know the value of Festival of Lights, Deepavali, in education. Okay. Now, olden days, obviously, Deepa, this is the one, Deepak. So my parents gave me name Deepak. Deepak लक्ष्मण राव वाइकर, पिता का नाम लक्ष्मण राव विश्वनाथ राव वाइकर, रहने का गांव है वाई, जिला परभणी, महाराष्ट्र, भारत, जग, होल वर्ल्ड। ओके, नाउ आई नो सम ऑफ यू मे बी सेइंग, तो क्या हुआ, आपका नाम दीपक है तो क्या हो गया? What's in the name? Who said it? हम दोनों ही हैं, तो आप गुलशन जी आपको थोड़ा याद है? Those who are on the YouTube, you can put on the chat box there. Okay, you can put on there, and those who want to communicate directly with Gulshan ji, they can send him. Who said it? किसने कहा है ये? याद आता है कुछ? जिसका आंसर सबसे पहले करेक्ट आएगा, you get 1000 rupees this evening. और उसके लिए डॉक्टर दीपक जी डिसाइड करेंगे। दिस प्रोग्राम इज लाइव ऑन द यूट्यूब, यू कैन पोस्ट इट ओवर देयर। जो दीपक जी ने सवाल पूछा है, व्हाट्स इन द नेम, ये किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, क्या चीज है, जो भी आप लिखना चाहते हैं यूट्यूब पर लिखिए। आइए, हाँ जी, ठीक है। तो कुछ 30 सेकंड्स वेट करते हैं, कैसा? 30 सेकंड के अंदर देना है उनको? वो करते रहेंगे 30 सेकंड तक, हम चलते हैं जी आगे। चलते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। ओके, तो मुझे बहुत कुछ, किसने कहा, किस कमबख्त ने ये कहा था? ओके, कौन कमबख्त कहता है कि आपका नाम क्या? हाँ, व्हाट्स इन द नेम, क्या है आपका नाम? डजंट मैटर। ओके, व्हाट्स इन द नेम, इट्स सेड बाय हूम? बहुत सारे शिक्षक तो पढ़ते ही होंगे, सुना ही होगा, विलियम शेक्सपियर का नाम, इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइटर, 64 से 1616, 15th century सर, 15th-16th century। उन्होंने कहा था, व्हाट्स द नेम, व्हाट्स द नेम दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल स्वीट। और दुनिया भर में इनका तो नाम है ना गुलशन जी, इनको तो मानते हैं सब। अंग्रेजी के माहिर है लिखने में, और सब लोग उनको। तो आजकल
No literature, okay, literature class will be starting without the name of William Shakespeare, correct? Almost all over the world. Okay, उन्होंने कहा था. So let us see now what's in the name. Okay, देखते हैं उन्होंने जो कहा है उसमें कितना तथ्य है और कितना मिथ है. Okay, by that time Dr. Deepak ji answer bhi aa gaya hai. It is from Manipur. It's a lady called Julie Subba ma'am. She told Shakespeare said that. Okay, yes, you can give her name. Okay, announce her name. Yes. Announce her name. Congratulations. Julie Subba. Congratulations. Julie Subba ma'am from Manipur. हाँ, से बहुत खुशी. This is the only first step है. There will be some more question now she has to answer before we announce her final. So पहला चढ़ाव, ये सिर्फ पहला चढ़ाव है. Okay, so this is कौन बनेगा. Okay, जो भी हो, जो भी गुलशन के दिल का पति. Okay, okay, thank you very much Julie. Okay, what say I think thank you. आपने पहला पढ़ाव आगे कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. So Deepak studied in Marathi medium, okay, till 11th standard. तब हमारे जमाने में 11वीं था, अब 10वीं हो चुका है. तो आपका पता चल चुका होगा कि हम कितने बुजुर्ग हैं, कितने बूढ़े हो चुके हैं. आपको पता ही चल गया होगा. कोई हर्ज नहीं, पता चल गया तो कोई हर्ज नहीं. वो भी आप संभाल रखेंगे बाद में कि आप सब मेरा ये देख के बताएंगे कि मेरी उम्र क्या है. ओके, in a small town called Parbhani, very small town. I think the closest you might know is Nanded or Aurangabad in Maharashtra. Okay, and I studied in my mother tongue. Okay, and that is why I'll relate to this. Now I will relate to it later on because national education policy is also emphasizing almost up to the at least till the high school should be in mother tongue. मुझे क्रिकेट अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलता था. हमारे पे तो अंग्रेज का राज था. तब हॉकी भी खेलता था मैं. ओके, ध्यानचंद जी, करेक्ट सर जी बता देना मेरा. ध्यानचंद जी का था. तो बीच में थोड़ा चेस भी घुमाते, चेस भी चलो खेलता था. हाथी घोड़ों को भगाते थे ऐसे ही. कैरम कंचित होगा. आई सो लाइक म्यूजिक, जिसलिए आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा ना ऐसे कि दिल हथेली पे ले आए, करे दिल हके गाना सुनाया. आई वॉज वीक इन लैंग्वेजेस. ओके, मेरे प्यारे शिक्षकों, प्राध्यापकों और परीक्षार्थियों. ओके, मुझे तो ओके लैंग्वेजेस में परेशानी होती थी. हिस्ट्री भी पता ही नहीं लगता था. वो पूछते सवाल कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ और अकबर ने कब क्या किया, और उसने, मुझे तो किसी का डेट याद ही नहीं रहता. सब गलत हो जाता था, सब कट हिस्ट्री. तो मैं बोलो तो मेरे क्रॉस वाले सब यस एक्स. ओके, आई वाज एक्स. ओके, दिस एक्स फैक्टर. And I looked on the internet. This is the photo of my school. Okay, when I studied in primary school, yes, still it is there. I like math, science, and geography. Okay, so Deepak, Diya. Okay, Deepavali. This will look like. Then what happened is, okay, as usual, I studied, and then parents say, "आपको बनना है तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो." लगा दे, बाकी कुछ मत बनो. अब तो ऐसे भी हमको हिस्ट्री पसंद नहीं आती थी. लैंग्वेज में बाजा बजता था, थोड़ा मैथमेटिक्स चलता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता था. तो चलो खेलते खेलते हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में आई गॉट द एडमिशन. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहां से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, सर विद्युत इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी में. सो वहां तो अभी से क्रिकेट खेलता ही था मैं. लर्न टीटी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जैसा आपने भी सीखा होगा जब अरुणाचल में आपकी पोस्टिंग हो गई होंगी तब. लाइक मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई स्टेड इन हॉस्टल, एट इन मेस.
how would have been my life, you can guess. Okay, stayed in hostel 8 in May, how would have my life, you can guess. और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जब उसको, इट इज अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, आई लर्न अबाउट इट. नाउ यू नो, I was born on day of Deepavali. My parents gave me the name Deepak. Olden days, Diya. I studied electrical engineering after almost 25 years. Okay, around 25 years, I became electrical engineer. Studied about electricity, and you know, light deep. Now deep is lighted by electricity. Now deep is lighted by electricity. क्या है नाम में, ये पूछा था ना, क्या है नाम में. तब तो पता नहीं था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा, पढ़ूंगा. उतना ही नहीं सर. ओके, तो इट वाज माय फॉर्च्यून टू गेट एडमिशन टू, एट दैट टाइम, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश. बहुत, आई थिंक दैट वाज माय वंडरफुल जर्नी. ओके, आई विल से, ओके, बीएचयू में रहा मैं मास्टर्स करने के लिए. बहुत सुंदर कैंपस है सर, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस. आई एम गेसिंग इट इज स्टिल देयर. ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट अगेन व्हेनेवर आई गेट अ चांस. जब वहां पहुंचा मैं, यस, व्हाइल स्टडीइंग टेक्निकल थिंग, मेरे दोस्त वहां पे, उत्तर प्रदेश के दोस्त, बिहार से आते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, तो महाराष्ट्र से उधर गए. तो उनके साथ, उनको बीबीसी सुनने में मजा आता था, बीबीसी हिंदी खास करके. सर हम सवेरे 7 बजे उठते थे और सुनते थे, ये बीबीसी लंदन है. आपने सुना होगा, 19, 25, 41 मीटर बैंड पर ये बीबीसी लंदन है. सबसे पहले हो गए समाचार, बाद में होगा हमारा विविध भारती कार्यक्रम. बस हम सुनते थे और पूरा सुनते थे उनके साथ बैठ के. तो मेरी उसके वजह से हिंदी थोड़ी ठीक हो गई. वो कैसे हिंदी जरा ठीक कर दी उन्होंने, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने. जो मैं भाषा में, जो मैं इतना कमजोर था, वहां थोड़ा अच्छा होने लगा. हिंदी में अच्छा हो जाएगा. ऑब्वियसली वहां से मेरी हिंदी सुधर गई. और काशी है, काशी में अगर हम रहे हैं तो सब बोलते हैं आपका तो भाग्य है, पुण्य है. काशी विश्वनाथ जी, जो कि विश्वनाथ जी के बारे में, और कैंपस में भी तो बहुत सुंदर विश्वनाथ जी का टेम्पल है. वहां बाहर तो कहीं भी जाओ, हर 10-100 मीटर पे तो वहां पे कुछ ना कुछ टेम्पल मिलेगा आपको, किसी न किसी का. संकट मोचन हो, सब देख लिया. तो मेरा अपने हिंदुइज्म के बारे में भी ज्ञान और अच्छा होते गया, जानने लगा, मैं सब करने लगा. और फिर मैं काशी में था तो हमारे रिलेटिव बोलते थे कि यहाँ जाके ये करके आओ, वहां जाके, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करके आता था वहां पे. ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहां पढ़ा मैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दीपक, दीपावली, दिया, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, दीपक. क्या है नाम ने पूछा था शेक्सपियर ने. क्या से क्या हो गया नाम के प्यार में. सुना होगा गुलशन जी, आपका प्यारा गाना आगे. वंडरफुल सॉन्ग ही, वंडरफुल. गाइड का गाना था, देवानंद का. एस डी बर्मन फ्रॉम त्रिपुरा, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ही गेव द म्यूजिक. यप. और हमने क्या किया, गाना वही है, और हमारी से क्या हो गया नाम के प्यार में. देखा नाम के प्यार में क्या हो रहा है, क्या से क्या हो गया नाम के प्यार में. आगे बढ़ते हैं. उतना ही नहीं, मेरे दोस्तों के साथ आई अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज वेरी मच पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया. एंड आवर पीपल देयर, आई थिंक दे आर स्टूडेंट्स, दे आर वेरी स्टूडियस, दे वांट टू गो टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, सम एग्जामिनेशन एंड जॉइन. सर जी, हमारे महाराष्ट्र में तब ऐसा था कि जाएगा कोई टाटा कंपनी में जाए, कोई जाए लार्सन और टुब्रे में जाए, ज्यादा बजाज ऑटो में जाओ. बजाज जी गया अभी ना, वो भी राहुल बजाज, उनका भी जोरों से औरंगाबाद में प्लांट था. तो सबको इंजीनियरिंग में आए, मतलब तो दे यूज्ड टू गेट कैंपस इंटरव्यू एंड गो टू इंडस्ट्री. मैं जब बीएचयू में गया तब मुझे उसके बारे में पता लगा. फिर दोस्तों के साथ पढ़ाई की उनके साथ, और पास हो गया. एंड माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट वाज असिस्टेंट डायरेक्टर एज नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर, महाराष्ट्र.
विथ हेडक्वार्टर, एंड ऑब्वियसली हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये अनदर सुंदर कैंपस में मुझे रहने का मौका मिला। और देखिए, ओके, और फिर ये है पावर कंट्रोल सेंटर सर। यहाँ से आपके कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को पूरा कंट्रोल किया जाता है। वहां पे भी हम ट्रेनिंग देते थे। अगर मैं वहां कंटिन्यू करता तो ऐसा बैठ के देखता कौन कैसा ठीक से कर रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, नाउ यू कैन सी दीपक, दीपावली, दीपा, अगेन इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। सो क्या है नाम में? व्हाट्स इन द नेम? There is lots in the name. Okay. Now I can tell you, अगर शेक्सपियर हिंदुस्तान, भारत में चक्कर भी मारते तो अपने स्टेटमेंट को बदल देते। मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों, मेरे प्यारे प्यारे प्राध्यापकों, मेरे प्यारे प्यारे परीक्षार्थियों, मैं आपको चुनौती देता हूं। जूली जी, चुनौती नंबर 2 आ रहा है, अगला पढ़ाओ। चुनौती नंबर 2, each one of you is going to also look at your name and what you are doing now. Try to relate. See, you will find some relation. जैसे गुलशन जी बहुत गुलदस्ते खिला रहे हैं, हाँ, धर्मा जी के सब गुलशन खिला रहे हैं, ज्ञान का गुलशन खिला रहे हैं। देखो खिल रहे हैं, गुलशन खिले हैं, बोलते हैं ना सर। उसी तरह मैं ऐसे ईच वन ऑफ यू, नाउ दिस आवर चैलेंज सर। गुलशन जी, हम सबसे, आपने तो लगाया माय स्टोरी वाला लगाया ना, हम सबसे everyone has to write 1 or 2 pages your story in the form of pictures, in the form of writing, in the form of poem, in the form of whatever you feel appropriate. Okay, कि what's your name, what's in the name, और हमको क्या करना है गुलशन जी, हमको प्रूव करना है कि शेक्सपियर जी पूरी तरह सही नहीं थे। Okay, we started with the hypothesis. Shakespeare said, what's in the name? And I have proven here, as far as I am concerned, that is the exception to Shakespeare's statement. So when he says, what's in the name? There is a lot in the name. So all जो भी अभी आपके दर्शक है अभी on the YouTube, on Facebook, wherever, whosoever are in your list, please send to them. The challenge for them is to write their story, what's in the name. And Julie ma'am got inspired from your talk, and she's writing ki sir, please tell sir in Singapore, even my parents named me as a Julie because I was born in month of July, and Julie comes from a Latin name Julia, and it's a very important, and Romeo Juliet. Wonderful, congratulations, आपने She दूसरा got पढ़ा inspired. भी। Wonderful, जुलिया जी, you have, आपने सिर्फ अगला पढ़ा भी पार कर दिया है। Congratulations, okay, अगला पढ़ा भी पार किया और आपके साथ हम खेलते रहेंगे। प्लीज stay tuned to with us. हम आपके साथ ये खेल खेलते रहेंगे, ये खेल खेलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर, okay, I work for National Power Training Institute for almost 5 years. जब वहां था मैंने I also studied with Nagpur University, okay, postgraduate in diploma in business management, PG diploma, PGDBM. तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कि you can study, if you wish to study, you can study while you are working. So I did this in part time. Okay, I did this in part time. Or then after working for 4.5 years, मुझे बहुत रुचि आती है. I got very much now what do you call, attracted to the electricity and power. I say I want to know more. मुझे और दिल मांगे more, मुझे और चाहिए, कुछ और सीखना है. So after working for 4 years, okay, 4.5 years, I applied and got admission to University of Saskatchewan, Canada. Okay, जब नागपुर में था, okay, Nagpur, you know, Nagpur during summer time, it was first, sometimes at that time it used to go to plus 40 degree, okay, plus 30, 40 degree.
University of Saskatchewan, Canada. Okay, during winter time, it can go to minus 30 degree. So देखा plus 40 degree से minus 30 degree में पहुंच गए हम. Okay, obviously Canada, I studied there. It is one of the prestigious university in Canada on power systems. So I studied there on scholarship, got scholarship, did the research by thesis. Okay. और पहली बार मुझे लगा ओके अच्छा रिसर्च पेपर कैसा लिखता है इंटरनेशनल लेवल का. मेरे गुरु से सीखा मैंने. वहां पे हर जगह मेरे गुरु भी थे. उनके नाम जहां जहां हो सके मैं ले लूंगा, नहीं तो समय कम है. Now you know, okay, I learned about power systems. So Deepak, Diya, electricity, light, Jnana Deepak. ज्ञान दीप. जैसे लाइट आते रहा मेरे दिमाग की बत्ती जलने लगी. दिमाग की बत्ती जलने लगी. सो क्या है नाम में, कैसे क्या हो गया नाम के प्यार में. What's in the name? Lots in the name. देखिए when my parents gave this name to me, nobody thought about it. Okay, I studied in Canada and completed my thesis, written research paper. ज्ञान बढ़ता गया. उतना ही नहीं. उसके बाद मुझे वहां पे मैंने रिसर्च स्कॉलर बोल के कुछ काम किया. सो देखिए फिर मैंने यहाँ पे काम किया, फिर पढ़ाई की, फिर यहाँ पढ़ाई की, काम किया, फिर पीएचडी करने सिंगापुर आ गया मैं. एंड when I came to Singapore, I also while I was doing my PhD, I worked for polytechnicals as a lecturer. I worked for private colleges as a visiting lecturer, adjunct lecturer. Okay. और जब my National University of Singapore, okay, one of the best university in Singapore, okay, मुझे कहोगे तो number 1 university in Singapore, okay. So I got now more good research, professional development program. So ज्ञान दीप का मुझे ज्ञान हो गया कि अब मैं कुछ न कुछ कर सकता हूं, कुछ न कुछ बता सकता हूं. So मेरी कहानी देखो, मेरी कहानी छोटे गांव से शुरू हुई, परभनी से. करते 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 मैं घूमते घूमते सिंगापुर पहुंच गया. और सिंगापुर पे रहने के बाद बहुत सारी रिसर्च के publications के, and some of the things I will share with you that we did project based learning almost 15 years back, and I was very happy to that one of my subject in energy system, power system, we were able to implement project based learning first time. It was challenging. And I'm also happy to tell you that in the same subject, after a couple of years, I also implemented design thinking. सर जी सब लोग बात करते हैं ना पीबीएल बातें करते हैं पीबीएल की, करेक्ट, बातें करते हैं पीबीएल की. 15-20 साल पहले हमने इसको इम्प्लीमेंट किया. डिजाइन थिंकिंग 15-20 साल पहले हमने इसको इम्प्लीमेंट किया सिस्टमैटिकली. यस, इनिशियली वाज इट इजी? नो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट वी डिड इट. और वो करने के लिए मुझे बहुत खुशी है बताने के लिए आपको कि मैं जब एडजंक्ट प्रोफेसर था वहां पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल ऑस्ट्रेलिया ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट एडवांस सर्टिफिकेट इन एजुकेशन करूं. अब तक तो सब इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी उसमें चल रहा था. थोड़ा पर यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट पे किया, फिर यहाँ पे मैंने एजुकेशन के ऊपर सीखा, वो भी हाइब्रिड मोड में. ओके, कुछ पार्ट टाइम, कुछ ऑनलाइन, कुछ वहां जाके. और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल देन अवार्डेड मी पीडी एडवांस सर्टिफिकेट इन एजुकेशन. इसलिए मैं एजुकेशन के और नजदीक आ गया. यहाँ पे ज्यादा रिसर्च था, पढ़ाना था भी थोड़ा ज्यादा रिसर्च करते करते एजुकेशन के बारे में. हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हाउ टू इम्प्लीमेंट डिजाइन थिंकिंग, हाउ टू incorporate active learning strategies in your teaching, how to redesign your curriculum, just rethinking of the teaching and learning, rethinking of pedagogy, all those aspects. I think we have written on that. I have written articles, small short essays on that one.
education. So देखिए, now because of education, Deepak become ज्ञान दीपक. हो सकता है मुझे आप बाद में जब आप आपको जब भी अवार्ड देना है तो मुझे ज्ञानदीप का अवार्ड दे सकते हैं आप. Okay? जब भी आपको लगेगा अच्छा. Okay? And then what happened is, जब मैं सब करने लगा, people were started asking me, hey, what is it, how you do it? And all of you know that when you work full time, it is not easy to every time to get permission from dean or director or principal. Okay, I want to go to NRIs to get a lot of, because I wanted to share this one to colleges and school in India. Okay. So last 20 years plus, okay, I have been regularly visiting India, and I come from small town, Permani. So I used to go to many small colleges, rural, I don't call it small, rural colleges, okay, small town colleges, okay. Mumbai, I have been to IITs first, IIMs also been, but later on, I started going to our what called tier 3 colleges. There is engineering, polytechnic, schools, or arts and science college, to share what? Two things only. One, what is happening in energy and why energy is important for India for the development, sustainable energy for development. And second, what should we bring into our education? How there is a scope to bring in multidisciplinary holistic education. Now, national education policy, I'm very happy 2020 they have now announced that one. Multidisciplinary education is one of the key component of national education policy 2020. To implement that, I think मेरे प्यारे प्यारे प्राध्यापकों, मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों, मेरे ओके और डीन्स, प्रिंसिपल्स, निर्देशक, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स, मेरी विनती है, प्लीज let us implement PBL and DT, project-based learning and design thinking, into our curriculum. We are going towards multidisciplinary holistic education. National education policy has given you mandate now. Immediately you can do is how to incorporate that. And I'll be very happy to work with the Gulshanji. I have been pestering him. Okay, we should do some workshop. We should do some training so that we sensitize all teachers, we sensitize all faculty members how it can be done. And I will share my experience, not theory. Okay, theory nahi. आपको जो बता रहा मैं आपको जैसे experience से बताऊंगा, experiential. And now I can say, okay, I can say with this one, that is why we formed Edu Energy. Earlierly, because my specialization is in energy system, power system, so education of energy was a starting point. But now also I say energy of education, both. Education of energy and energy of education, both are team. That is why I formed, and last almost now 2014 we formed it, and since then now I have got more freedom to go to India and do it face to face. Earlier, obviously, face to face is more powerful. I fully agree. But last 18 months, I have been doing almost more than 100 webinars or something. I have been talking almost every week. I have been speaking to one college or other. Almost every week, one or two. Okay, doing it through this online is possible now. Online, it is much easier. Okay, पहले तो मुझे जाना पड़ता था. You have to travel, then go there, and a lot of time would have been gone into travel. Now, online, easily, hybrid. That is why I am also for the hybrid education now. Okay, Gulshanji, with this simple story, I have now proven, as far as Deepak Lakshmanrao Waikar is concerned, Shakespeare was dead wrong. I have proven one of the world's most famous authors, okay, poet, playwrights, wrong on that statement, okay, only on that statement, okay, not others, okay. What's in the name? Lots in the name. क्या है नाम में? बहुत कुछ है नाम में. और हमारे भारतीयों के नाम में तो पूरा भारत बसा हुआ है. भारतीयत्व है. okay? क्या आप दीपावली और दिवाली के बिना भारतीयत्व मान सकते हैं? कोई दिया जलाए बगैर कोई भारतीय उत्सव हो सकता है?
अगर आपको पढ़ना है और बिजली चले गई, बिजली के बिना आप, लाइट्स के बिना आप पढ़ सकते हैं। और अभी जो हम कनेक्टिविटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से, उसके बिना है, भारतीय है। अब हर एक के नाम में, मैं तो कहूंगा हर एक के नाम हमारे भारतीय कुछ न कुछ है, जो हम हमारे देश के लिए, खुद के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, वसुदेव कुटुंब के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, आप तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन बेस्ट वे यू कांटेक्ट थ्रू गुलशन जी, क्योंकि गुलशन जी जब मुझे आज्ञा करेंगे तो मैं दौड़ा 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 आ जाऊंगा। ओके ओके, बस उन्होंने बस जल्द, और आप गुलशन जी को पता है, गुलशन जी ने कभी कभी तो मुझे वेरी शॉर्ट नोटिस में बुलाया है। अब तो क्या है नाम है, तुम सो किस लिए बना रहा हूँ, ओके, तो आपको आगे मैं बता देता हूँ। जो 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 दीपक वाइकर, ओके, आपको कहा था, ओके, कि जिसकी भाषा भाषा में परेशानी होती थी उसको, करीबन 2006 में, 2006 मार्च में लिखा था मैंने ये, मैं तो वो हूं जो है सब में, मैं तो वो हूं जो है सब में, आई एम द वन हु इज इन एवरी वन, हु शेयर कॉस माइंड इज इन, ओके, दैट, जो भी कहे मुझे अपना वो है मुझ में। Why are you searching for me on moons and stars? क्यों मुझे ढूंढते हो चांद और सितारों में? मैं तो हूँ हर समय मन ही मन में, मैं तो हूँ हर समय मन ही मन में। So I am the one who is in everyone, whosoever calls me mine, I am in that one. Why are you searching for me on moons and stars when I am all the time there in the heart of the heart? हर एक के दिल में बैठा हूं मैं, हर एक के दिल में एक एक दिया है, छोटा सा क्यों ना हो, आपको उसको प्रज्वलित करना ही होगा। अगर दिया प्रज्वलित नहीं हो आपके दिल का, तो आपका आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। और जब अगर शरीर ठंडा हो गया तो आपको पता है क्या होगा। तो हर एक के दिल में दिया है, हर एक में दिया है, दीपक है, मैं तो हो तो। So this was revealed. I'm not saying I sat down and said I'm going to write like Shakespeare, this is a playwright. No, I did not. And I will tell the story some other time, that how it happened, how these 4 lines got revealed to me. Okay, and I am the only medium. मैं सिर्फ माध्यम हूँ, ये सब हमारे ग्रंथों में है, हमारे, ओके, जो भी वेद में है, वेद वाक्य में है, भगवत गीता में है, ज्ञानेश्वरी में है, ओके, आप निकाले, सब जगह यही है, उसमें है ये। और आपको भी है, आपको भी पता लग ही जाएगा उसका, जब भी आप कुछ करोगे। तो सवाल देना आता है, हु एम आई, करेक्ट, ये सवाल तो हमने बहुत बार सुना है। कब आप कहेंगे हु एम आई आस्किंग दैट डिस्कोर्स क्वेश्चन। हमारे आते हैं बड़े बड़े ज्ञानी, आते बोलते हैं और पूछते हैं, आपको पता है आप कौन है? कुछ तो बता रे, कुछ तो बता। ओके, हु एम आई, कौन हूं मैं हूं कौन? गुलशन भाई, मैं डॉन नहीं हूं, मैं डॉन नहीं हूं, दीपक लक्ष्मणराव वाइकर, दीपक लक्ष्मणराव वाइकर, ये है मेरी पहचान, और यही है मेरा नाम, यही मेरा धर्म, यही है मेरा काम। आप तो मैं सबको पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों, मेरे प्यारे प्यारे परीक्षार्थियों, प्राध्यापकों, और सबके सब वाइस चांसलरों और मिनिस्टरों, मंत्रियों, और जो भी हो, इज आत्मनिर्भर भारत विजन feasible without quality, secure, reliable availability of affordable education? जूलिया जी लिखिए अभी आपका, एवरीबॉडी पुट इन द चैट बॉक्स ऑफ यूट्यूब, बताइए उसमें, इज इट फिजिबल, इज इट पॉसिबल, इट इज डुएबल। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया,
विदाउट आई एम वर्किंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा वैसा नहीं, हमें अच्छा चाहिए, ऐसा वैसा नहीं, हमें अच्छा चाहिए। okay? कैसी शिक्षा चाहिए? इज इट पॉसिबल? आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? किसने दिया आंसर सर जी? ओके, Julie ma'am has posted, she has written, so true and so correct. Sir, it is not possible without quality education. जूलिया जी, आपने तीसरा पड़ाव पार कर लिया है। अब अगला सवाल जरा ध्यान से खेलिए। ओके, अगर आप अगले सवाल का जवाब गलत दिया तो आप फिर से नीचे आ जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए। सो यस, सो जूलिया जी ने कहा है। गुलशन जी, आप सहमत है जूलिया जी से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके 1000 से 1500 रुपए हो गए। देखिए आपको क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, सो नाउ दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस, ओके, ऑल ऑफ अस हैव टू इंश्योर। तो हमको कैसी चाहिए शिक्षा? कैसी शिक्षा चाहिए? शिक्षा, शिक्षण, करेक्ट, शिक्षण मंत्र, शिक्षा कैसी चाहिए? कैसी, हाउ, कैसी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबको, ओके, सबको पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें झक्कास शिक्षा चाहिए या भक्कास शिक्षा चाहिए? बताइए, झक्कास शिक्षा या भक्कास शिक्षा, कौन सी चाहिए? क्वालिटी झक्कास, सिक्योर झक्कास, रिलायबल झक्कास, अफोर्डेबल झक्कास, या भक्कास? सिर्फ सिर्फ रट्टा मारो, रट रट के हुई दिमाग की बत्ती गुल, रट रट के हुई है दिमाग की बत्ती गुल, हो गई इंतहा, गया सब कुछ भूल, okay? सब भूल गए, हो गई इंतहा, गया सब कुछ भूल। कौन सी चाहिए, झक्कास या भक्कास? डालिए चैट बॉक्स में, अभी अभी डालिए, आपका आपका समय चैट बॉक्स में डालिए, झक्कास शिक्षा या भक्कास शिक्षा? कोई दे रहा है जवाब सर जी? We give them 30 seconds. Let them 30 write. We just move ahead. We move ahead. ओके, क्योंकि मैं जो जो बताने जा रहा हूं, अब हाँ। मैं कुछ झकास शिक्षा कैसी होती है उसके कुछ नमूने बताऊंगा, एक दो बस, और फिर हम क्योंकि झकास शिक्षा चाहिए तो सबसे बहुत जरूरी है, हमें झकास गुरु चाहिए। ओके, माता सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए, चाहिए ही चाहिए, सरस्वती वंदना जरूर। और आपने तो कहा था वसुदेव कुटुंबम, करेक्ट, कुटुंबम, कृष्णन वंदे जगत गुरु हमारे साथ चाहिए चाहिए। तो हमारे जो शिक्षा का मूल्य बोलते हैं, मूल्य, मौलिक शिक्षा, शिक्षा का वैल्यू, एथिक्स ऑफ द एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ड्यूटी ऑफ द एजुकेटर्स, भगवत गीता में लिखा हुआ है, कृष्णन वंदे जगत गुरु। हाँ, आप कह रहे हैं कि अभी हाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए 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 कि अनाउंस हुआ है अभी भारत के बजट में, डिजिटल यूनिवर्सिटी आने वाली है, तो आपके परीक्षार्थी ऐसे हो जाएंगे, कितने सारे गैजेट है रे, कितने सारे गैजेट है, इधर एक गैजेट, उधर एक गैजेट, वैसा गैजेट, वैसा गैजेट। ओके, देखो, और जब जैसे हमने देखते हैं ना कि हम जब देखते हैं कि जब कभी कभी हम जब भगवान की तस्वीरें देखते हैं तो उसमें 6 हाथ हाथ रहते, अलग अलग रहते। आप जब ओके, अभी कभी 1000, कभी 100 साल के बाद बोलेंगे शिक्षक विद्यार्थी कैसे थे, तो बोलेंगे ओके विद्यार्थी ऐसे थे, विद्यार्थी के इधर एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में वो, दूसरे हाथ में है वैसे। ओके सब, और उसके लिए इंटरफेस आपका ये तो है ही है। सो यस, वी नीड टू कनेक्ट
we need a connectivity that has to happen. That is where I would say that all our top industrialists, okay, instead of giving them just tax rebate, government should ask them to set up better infrastructure on digital one. Unka tax, okay, kar kam mat kariye. Because what they are doing is, all those business people, they are taking the tax rebate and putting that stock exchange and just playing game. Jugaad, okay, jugaad, okay, no. This is what we wanted. Then, as rightly mentioned in the national education policy, और अगर गुलशन जी चाहे तो मैं इसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया टीचर डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट काम करना पड़ेगा. इसे सिर्फ आपके सुनने के लिए नहीं है. दिस इज विथ असाइनमेंट्स that you can see they have to do assignments, designing integrated multidisciplinary holistic curriculum in line with national education policy. Okay, in line with national education policy. I will share with the experience, not only theoretical knowledge that you need to use Bloom taxonomy and you have got KPL or something like that, and first you write this one, these words on that. No, more than that. Systematically. सुग्रथित बहुविषयक संग्रहात्मक शिक्षा. Guaranteed. अगर आप मेरे साथ, okay, you do those sessions with me, your undergraduate degree will be ready. What should be in line with integrated multidisciplinary holistic curriculum. पूरा curriculum तैयार करके दूंगा आपका. That will be your answer. You just follow my, okay, what I have in my slides like this one. You just follow and do it. Same thing, you write your story the same way, just you follow that. What's in the name? Exactly, that systematically I will take you. So our research hypothesis was, what's in the name? Who said it? The topmost. And we have seen by experience, we have shown. And I'm sure more and more of you are going to write stories and sending it to Gulshanji, and Gulshanji, we will make one e-booklet on that. Those who send nice stories, I will be very happy to co-edit with you, Gulshanji. Invite them to write those stories, and both of us will prepare a nice ebook to prove, what is it? To prove Shakespeare has not, okay, completely done the proper study when he wrote that statement. Okay. Another very powerful program. Okay, आपने कहा था ना आज के दिन ही बताए. Very powerful program, I can tell you. शिक्षकों और प्यारे प्यारे प्राध्यापकों और those who are aspiring to go do their best in their education, research is the most fundamental component of that. Research is the 21st century skill. Okay, without proper research you cannot progress. Just हवा में बातें करती नहीं होता. Otherwise you see that just I have shown you how Shakespeare, who is considered to be one of the most followed one in the literary, proven wrong. This is how you do systematic research, not by just air. Okay, और Shakespeare गलत था, दीपक वाइकर गलत है. कैसा गलत है वो बताओ, दिखाओ आप उधर. Systematically दिखाओ. Now all those what I said, I stated fact. Okay, my story, they are all facts. You can verify. You can go on my LinkedIn. You can see the certificates. Whatever I have written there, you will find on my LinkedIn. I have put facts there, certificates are there. And then with that one, I can tell you, nurturing, आप जो बोल रहे हैं ना, nurturing resilient researcher pro mindset in self. One of the most powerful program. In this one, my 30 years of tapasya is inside this one. Okay, क्योंकि मैंने आपको तो बताया था ना यहाँ पे. I have traveled the various places, learned from various gurus at various places, more than 5 universities, sir, more than 5 universities. I have got personal experience either as a student, a researcher, faculty member, visitor, okay, whatever you name it.
more than 5, India se to top 2, and overseas also. So I'm going to bring that knowledge. What I have done is I use this one to make a infusion, nice fusion kiya hai unka. Fusion of all this one. And then I'm bringing here, okay, all these programs. I'm bringing that fusion here. Research, also fusion here. You do this program. आपका मेंटल हेल्थ सब निकल जाएगा. आपकी मानसिकता इतनी तेज बन जाएगी, इतनी तेज बन जाएगी, आपके ऊपर कोई भी संकट आए तो बस आप जय श्री राम कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे और उसका सामना करेंगे. That is what my assurance to you. क्योंकि लॉकडाउन में मैं 3 से 4 महीने कैद में था. मोदी जी ने मुझे कैद कर दिया था. हिंदुस्तान में गया था और उन्होंने मुझे कैद कर दिया. 4 महीने लगे मुझे उनसे कैद से छुटकारा, बेल मिलने में 4 महीने लग गए. और फिर यहाँ आके 14 दिन सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने हमको कैद कर दिया. 14 दिन क्वारंटाइन बोले, नहीं निकलने. So I have gone through this one. I can understand it. Okay, I have seen it physically. I have seen there what happens when you are not allowed to come out. And when I used to travel a lot, I got stuck there. Okay, I know about it. So I will be very happy to share with you my challenges, how I overcome that, and now how I have come out of that, and with a more energy and vigor, I am sharing with this one. Om Purnamidam Purnat Purnamidaschate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashistate. Om Shanti Shanti Shanti. हरि ओम गुरुविंद. मुझे बहुत खुशी है, आनंद है कि गुलशन जी ने मुझे ऐसा कहा ना, आपने पुकारा और हम चले आए. पूरा ज्ञान हथेली पर आए और आपके सामने उसको प्रकट कर दिए. अब बस मेरे प्यारे प्यारे प्राध्यापकों, शिक्षकों, परीक्षार्थियों, आपके ऊपर है. जो आपको अच्छा लगता है उसको लीजिए, जो ठीक नहीं लगता कोई हर्ज नहीं, उसको बाजू डाल दीजिए और आप बता दीजिए कि झकास लगा, कौन सा झकास रहा कि कैसा लगा आपको. झकास शिक्षा या भकास शिक्षा. Wonderful. Such a pleasure, such a pleasure. Wonderful. Today you gave so much of positivity, so much of energy, so much of valuable inputs. And in a very humble way, you started where basically it was, what is there in the name? What is there in the name? And your journey today, I could link up the electrical engineering and how the urja and how the energy has moved and how now the edu energy. Today, I could link up everything nicely. And bringing the total experience from Canada, from Australia, from other parts of the world, and now for a long duration in Singapore. I very strongly believe that instead of going to a long haul destinations and other things, people should think about Singapore, because Asia mein, this is one of the prestigious places for education where people can think a lot and we can work out a lot of strategies and some joint programs with you which can be thought of. And we are basically for teachers, for administrators, educators, counselors, we can have a separate profiles and where we can bring combination of couple of verticals which is needed post-pandemic, particularly in our education ecosystem. Most of the people, they feel it. We have lost 2 years. Children have lost 2 years. They got to make it up. I would rather say every challenge brings a new opportunity. Had this pandemic not been there, we would have never appreciated, recognized, and rethought the education ecosystem. Because as there was a challenge in the health sector, similar way there was a
drastic challenge in education ecosystem also. And Walikarji, teachers, they need a lot of support. They need a lot of hand-holding. They need a lot of encouragement. We got to see their personal and professional growth in all respects, because they are the one, those are really going to make India Atmanirbhar Bharat. And at the same time, women empowerment would also be very important, because without the partnership of the women, most of the ladies are into the teaching profession, education, eco-vertical. So we got to think from that perspective also. We should plan it out. Technology, we have to bring very deeply, and we cannot get back to the January 2020. We have to move ahead now. New education policy is also in place, and you have given wonderful, kind of inputs where we have told value of education, and then effective remote learning and the hybrid model. Maybe, I do not know, few months there may be a challenges that initially we work out something online, and as the situation improves, then we work out a hybrid, and thereafter when the situation is totally normal, then we hold it physically as it is to be done on the soil of Bharat. Something of that kind we can plan it out. People those have joined us from the CBSE, people those have joined us from Kendriya Vidyalaya Sangathan, and people those have joined us from Navodaya Vidyalaya Smiti. I personally feel that we should involve Dr. Deepak L. Waikar ji, and where we can bring in lot of synergy between India and Singapore together through the vertical of education ecosystem. So with these words, my deep gratitude and thanks to you for having come today, having shared your vision with all of us. And it was such a beautiful, because children need fun, they need humor, they need happiness, they need music, they need dancing, they want to feel. So today you have given all those dimensions, and also your backdrop gives a beautiful, when the global warming is taking place, climate change is there. So we have to take care of our Mother Earth also. We have to be in harmony with nature also. And I think we got to live with nature, through nature. That is also something very important which we have to take into consideration. So with these words, we convey our deep thanks to Dr. Deepak L. Waikarji for having come today. And I pray to Almighty that soon we should work together on some project. Thank you very much. Thank you. Thank you. आपका बहुत बहुत आभार. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और हो सकता है जूलिया जी ने झकास का भकास दिया है, पता नहीं, और उसके बारे में हमें बता दीजिए बाद में. मुझे बहुत खुशी होगी जूलिया जी का. अगर Julie ma'am is from Manipur. She joined us from Imphal in Northeast, and she is a regular visitor on our YouTube, and she takes a very active part. 3-4 people are very, very strong. One is Mamta Chauhan. She's from Uttarakhand. Wonderful. Very active part she takes. There is another lady called Sakshi. She's from Dehradun. So, and then from our Tamil Nadu, Arumugam Srinivasan ji, Lokesh ji, and there's a new gentleman who has joined today, Graphic KV, and they told Jakas Shiksha. It is different kind of a Shiksha. I love his teaching way, and it's a very valuable information. Like that, a lot of posts have come over there. Then Yangir Yapto, all the way from Nagaland, Puneet Kumarji, thank you very much. And then Anand Mukherjee from Kolkata, Nancy Sangma from Garo Hills in Meghalaya, Kim Kepgan, that is again from Nagaland. Then we have got J. Subha Lakshmi from Tamil Nadu, Arumugam Srinivasan ji from Tamil Nadu. Then we have got over here Arumugam ji, Julie ji, Mamta ji, J. Subha Lakshmi from Chennai.
That's again from southern India. From Tura, and that is from Garo Hills, Mr. Tyrone D. Brass. He's a headmaster of a wonderful school over there, and he is doing an excellent work in the Northeast. Kim Kipken, hearty welcome. Thank you very much. And then we have got, there is a group, Earn and Learn. It's a group of students, Earn and Learn. And then we have got Shivani Gogai from Happy Arunachal Day. Okay, she's from Assam. And then we have got another group of 400 kids. It's a BB Subha Foundation. BB Subha Foundation, Happy Arunachal Day. And then Anand Mukherjee from Kolkata and Mr. Ajay Kundal from Punjab. Today they were elections today. Casting of the vote was there in Punjab. So he's joining us from Punjab, and a couple of other dignitaries. Ladies and gentlemen, if I have left somebody, because I can see on my YouTube, 677 people are there. Those are watching this particular program. So I'm grateful to all of them. My deep gratitudes to all of them. And we are really, really grateful. Thank you very much for a wonderful session. It was very enlightening. It was very relaxing and soothing. And it was a very subtle and at the same time very deep message in a very, very polite and a submissive way, where we just wanted that nobody should have a pressure, they should enjoy. And education should be fun. Learning should be fun. Learning should be happiness. And I think three buzzwords which we have to bring are curiosity, creativity, and communication. All three will bring it for teachers together. Thank you very much, Dr. Deepak ji. It was a pleasure to have you with us. Namaskar and Shubh Ratri. It's so late, but still you are with us.